Sure, sure. Okay, sir. Good morning and welcome to today's webinar on impact of COVID-19 on marginalized section. Thank you for being here today. I am Dr. Ullas, Head, Department of Geography, BRB College, and the convener of this webinar. Talking about the relevance of this webinar, the COVID-19 pandemic has infected approximately 16 million people and the death toll has surpassed 6 lakh across the world. India too has borne the brunt with cases increasing each day. The impact of the pandemic is visible across the sector globally, but its impact on marginalized sections has been immense in India. This crisis is going to affect economy as never before, leading to massive psychosocial impact as well. Women are at great risk from the health perspective. Homes, which were already unsafe along with families living in poor and substandard condition, have added on to the social inequalities like gender-based violence and child abuse, lack of security and money and health. On the other hand, the issue of migrant workers was one of the most crucial and highlighted issue in the pandemic where millions were rendered unemployed and stranded without money, food and shelter, crisscrossing the country's highway to return to their village and several meeting with accidents and death on their way. Unemployment has rendered a large section as directionless, leaving the social health as well as economy in shambles. In these hard times, it is imperative to have a discussion on how this epidemic will affect the lives of the marginalized. We have with us the two very eminent scholars, Dr. Archana Kujur and Dr. Sanjeev Sarkar from Central University of Karnataka, to discuss more about the impacts so far and the impending problem that this epidemic is going to impart on the marginalized section of our society. Now, without further ado, let me invite Dr. LP Jaiswal, Principal, BRB College, for the welcome address. Sir, please. Sir, unmute कीजिए sir. Yes, sir. Thank you, Ulasa. Most respected, our patron, Honorable Vice Chancellor, Ellen Mithila University, Darbhanga. Respected, our Chief Guest, Professor Ashok Kumar Pandey, former HOD, Department of Geography, A&D College, Sahapur Patori. Most respected, Dr. Archana Kujur, our resource person of this webinar, and Dr. Sanjeev Sarkar, Department of Geography, School of Earth Science, Central University of Karnataka. Honorable Convener Dr. Ullas T, HOD, Department of Geography, BRB College, Samastipur, Organizing Secretary Mrs. Sapnam Kumari, HOD, Department of Political Science, BRB College, Samastipur. Organizing Committee members, Dr. Bindyachal Shah, HOD, Economics, BRB College, Samastipur. Dr. Nirmala Kushwaha, Department of Commerce, BRB College, Samastipur. Honorable all the professors of the college, all non-teaching staff of the college, professors, research scholars of various states and universities of the country connected with YouTube Live, media persons, president and other officers of student union, all the students of the college, ladies and gentlemen. Mithila is the land of culture and land of agriculture of fish, fox nut and betel. I mean to say that in Hindi, maach, makhan evam pan. These are the main product of Mithila. Best hospitality is the culture of Mithilanchal. According to the tradition of the Mithila, first of all, I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor, who is a renowned scholar of international fame. Then, I would like to honor our chief guest, Professor Ashok Kumar Pandey. He is a renowned scholar and very kind-hearted. A true follower of Thakur Anukul Chand, sir,
Your kind presence on this occasion shall greatly boost the morale of scholars, students, and faculty alike. We have with us two young and energetic scholars in the field of geography, Dr. Archana Kujur and Dr. Sanjit Sarkar, both from the Central University of Karnataka. I welcome you both to this webinar. I would like to welcome especially those participants who joined us from other countries like Nigeria and Luxembourg. A very good morning and warm welcome to all the professors, all non-teaching staff of the college, all participants from every part of the country who have joined us in today's webinar on the topic impact of COVID-19 on marginalized section organized by the Department of Geography. Sir, first of all, I would like to introduce our university and college because you are from south part of India. It is indeed a matter of pride for me to talk about our university and college. The Lalit Narayan Mithila University is a public university in India. Began in 1972, the university initially functioned from the Mohanpur House at Sara Mohanpur village of Darbhanga, Sakri route. In 1975, it was shifted to the campus belonging to Raj Darbhanga. The university is in Darbhanga town. Mithila, an ancient cultural region of North India, lies between the lower range of the Himalayas and the Ganges River. The university imparts education in fields such as humanities, social science, life science, commerce, and medicine, with both undergraduate and postgraduate courses. More than 400 faculties are engaged in teaching and research. The founder of the college, late Baliram Bhagat, was a great freedom fighter, a renowned economist in the world. He held key positions in different ministries, central ministries. He was the governor of two states like Rajasthan and Himachal Pradesh. He was the fifth Speaker of Lok Sabha. Baliram Bhagat College is a constituent unit of Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, imparting education till honors levels in arts, science, and commerce stream. A multi-faculty co-education institutions, the college till date maintain a distinguished place in the university. BRB College is situated on the southwest end of Samastipur on the main road leading to Patna. The college has a very refined wall campus comprising of about 6 acres of land based on the outskirts of Samastipur town. College enjoys the natural open environment coupled with the urban facility. Its strategic location attracts students from both the urban and rural surroundings. It is registered under 2A of the UGC Act and receiving grants from the University Grants Commission under various schemes and was accredited by NAC. Today, the college has a
well-defined science block with latest lab facility, full of requisite equipment, a well-stacked library, about 50,000 books and journals with separate reading section for students and teachers. यह तो हुई आगत अतिथियों जो देश के कोने कोने से और हमारे जो दो रिसोर्स पर्सन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से जुड़े हैं, ये स्वागत की बात, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के परिचय की बात, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि 122 यूनिवर्सिटी और 24 स्टेट यानी लगभग देश का कोना कोना जो है आज जुड़ा हुआ है इन दोनों रिसोर्स पर्सन और हमारे चीफ गेस्ट को सुनने के लिए। हमारे चीफ गेस्ट तो मैं इनके बारे में बाद में बताऊंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। ये नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के वक्ता हैं और आज हम लोग को बताएंगे ऐसे तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ही सिर्फ हम चर्चा करें कि इसका क्या प्रभाव है गरीब तबके के लोगों पर, जो लोग हाशिए पर समाज में हैं उन पर। अगर इसका निदान की चर्चा नहीं करें तब वेबिनार की सार्थकता उतनी नहीं होगी। तो इसका निदान कैसे हो, इस महामारी काल से हम बचे कैसे, इस पर भी चर्चा होगी। और हम समझते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट हैं, इस पर भी ज्योग्राफी के विद्वान ही हैं, बीएचयू के प्रोडक्ट है, विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे कि इस प्रभाव से हम मुक्ति कैसे पाए, इस महामारी कोरोना से हम मुक्ति कैसे पाए, विशेष रूप से वही बताएंगे। क्योंकि टाइम सीमित है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि भाई चांसलर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ये 3 यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, यानी मोटा मोटी ये लगभग नॉर्थ बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं इस महामारी काल में। तो सवेरे बात हुई ये टू VC से, तो उन्होंने कहा कि सब नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले सेमिनार, सिम्पोजिया, कॉन्फ्रेंस कम से कम 3 महीना पर करते थे, आज रोज 3 वेबिनार हो रहा है। तो जब ये वेबिनार की बाढ़ आ गई है, ऐसे में भाई चांसलर का जुड़ना कठिन काम जरूर है। उन्होंने मुझे जवाबदेही दी है कि आप मेरी तरफ से भी कुछ इनॉग्रल एड्रेस कर देंगे। तो मैं भाई चांसलर के बिहाफ में यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन की चर्चा आज होगी कि उस पर इम्पैक्ट क्या है कोविड-19 का। ऐसे तो ये ऐसी महामारी है कि मार्जिनलाइज सेक्शन ही नहीं कि बड़े बड़े लोग, नेता, MLC, MP, मिनिस्टर, गवर्नर हाउस तक भी, जैसे बिहार में 3 दर्जन से ज्यादा गवर्नर हाउस में पदाधिकारी और कर्मचारी। उल्लास साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? उल्लास साहब? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। से ज्यादा मैं भी सुन रहा हूँ सर, अधिकारी मैं भी सुन रहा हूँ। इस कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। तो ये तो छोटा और बड़ा किसी को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन सभी वर्ग को प्रभावित किया है, सब वर्ग पर इसका प्रभाव है। प्रभाव तो सो है कि जान पर ही आफत है। अभी आंकड़ा 30-31 हजार को इंडिया में पार किया है और लाखों में पूरे विश्व में है। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? बेरोजगारी की समस्या तो सो है कि मैं समझ रहा हूँ कि जितने कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा बेरोजगारी से दम तोड़ देंगे। अभी मुझे इसे कंप्लीट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन सुनी हुई बात मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक की बात मैं बता रहा हूँ, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये मार्जिनलाइज सेक्शन ही प्रभावित है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा घर कर गई है। ऐसे हमने कहीं पढ़ा था अर्थशास्त्र की किताब में
कि भारतीय किसान, भारतीय मजदूर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के तहत आते हैं, ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में पलते हैं और ऋण में को विरासत में छोड़कर मर जाते हैं। ये तो भारतवर्ष की पहले से ही स्थिति है। इस कोरोना के चलते इसमें और वृद्धि होगी। वो ऋण में ही जन्म लेंगे। अब तो लगता है कि यदि कोरोना का कहर बहुत दिनों तक रहा तो जन्म भी लेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। प्रोडक्शन ही बंद नहीं कहीं हो जाए, क्योंकि हमारे संत शिरोमणि जो आज गेस्ट है, हमारे चीफ गेस्ट है प्रोफेसर अशोक कुमार जी, जो ज्योग्राफी के ही विद्वान है, बीएचयू के प्रोडक्ट है। ये तो अध्यात्म में भी विश्वास करते हैं और इनका जहां तहां वेस्ट बंगाल में भी प्रवचन होता है, इसलिए ये बांग्ला भी जानते हैं, ये विदेशी भाषा भी जानते हैं, अंग्रेजी और हिंदी भी जानते हैं। इनकी तो प्रतिभा निराली है। वो बाद में आप सुनेंगे, क्योंकि वेब है, ये सेमिनार नहीं है कि घंटों चलेगा, 2 घंटा 2.5 घंटा में प्रोग्राम खत्म करना है। इसलिए मैं उन्हीं के लिए ज्यादा समय छोड़ता हूँ। हमारे रिसोर्स पर्सन जो कर्नाटका से जुड़े हुए हैं, सुनना तो विशेष उन्हीं को है, हम लोगों को सुनना है, सुनाना कम है। तो जहां तक इम्पैक्ट की बात है, ऐसे समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। लेकिन मध्यम वर्ग से जो ऊपर है या हायर मिडिल क्लास है, वो तो 100 ग्राम क्या कहते हैं सैनिटाइजर जो 50-55 रुपए में मिलता है, मात्र 100 ग्राम का दाम है। इतनी बड़ी छोटी शीशी है उसका, वो खरीद के हाथ में लगा लेगा, गाड़ी को सैनिटाइज कर लेगा, घर को सैनिटाइज कर लेगा। जरा खर्च देखिए कितना खर्च है इस पर, साधारण खर्च नहीं है। तो बड़े तबके के लोग कर लेंगे, लेकिन छोटे तबके का, जिसके सामने भोजन की समस्या है, आज मार्जिनलाइज सेक्शन में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के आते हैं, मजदूर ठेला वाले की स्थिति क्या है? उसका तो कारोबार चौपट हो गया है। बड़े बड़े होटल व्यवसाय, पर्यटन, ये सारे चौपट हो गए हैं। लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो फिर ये होटल व्यवसाय, पर्यटन, मजदूर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के तहत आता है, उसका ठेला रिक्शा दिन भर भटकते रहता है, कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो बेरोजगारी की भयंकर समस्या होगी। सबसे बड़ा इसका ये होगा कि इकोनॉमिक इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा हमारे समाज पर, विशेष करके मार्जिनलाइज सेक्शन पर। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा, जैसा कि आपने ब्रोशर में दिया है, सोशल एंड साइको। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट यह होगा, आप सुनते होंगे कि अमुक व्यक्ति का किसी की मौत सुन करके उसका हार्ट अटैक हो गया, बगैर कोरोना के ही मर गए। ये प्रभाव है कोरोना का, कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जो अब हम सुनते हैं कि भाई ये ऐसा कोरोना है जो अगर घर कर गया शरीर में तो पूरे परिवार, पूरे समाज को तबाह कर देंगे। अब आज आदमी आदमी से डर रहा है। हम लोग वेब लेक्चर कर रहे हैं, वेब टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग टीचिंग कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आमने सामने बैठने पर खतरा है। तो इतना बड़ा प्रभाव है, इसका सोशल इम्पैक्ट भी है, सामाजिक। यानी पहले एक और हमको आ रही है कि सामाजिक विषमता की खाई तो भारत में पहले से ही है। इस कोरोना के चलते अब सामाजिक विषमता की खाई और गहरी हो जाएगी। समाज 2 वर्ग में जो सोशल इम्पैक्ट है, इसका मैं शॉर्ट में ही कहूंगा क्योंकि बहुत लंबा विषय है ये। हैव एंड हैव नॉट्स, समाज के 2 वर्ग तो पहले से ही है और इन दोनों के बीच गहरी खाई है। वो खाई और गहरी होती चली जाएगी इस कोरोना के चलते। अब तो गरीबों का जीना दुभर हो गया है। तो ये है हमारे कोविड-19 के इम्पैक्ट ऑन मार्जिनल सेक्शन। ऐसे तो विशेष रूप से यही लोग तबाह है। ऐसे तो देखा जाए तो मुंबई आर्थिक नगरी में जो महानायक, विश्व नायक
अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार तबाह है। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मिनिस्टर लोग मर रहे हैं। अभी हम बिहार का जो हमारे लोग कर्नाटक से आए हैं, न्यूज सुनते ही होंगे कि हमारे राजभवन में जिससे हम लोग गाइड होते हैं उसमें 3 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी और कर्मचारी इस रोग से संक्रमित हो गए। हम तो अपने ऑर्गेनाइजर को, कॉलेज के टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हर जगह भय और दहशत का वातावरण है, प्राण पर संकट है, कब क्या हो जाएगा। बाजार जाते हैं, भय बना रहता है कि कोरोना लेके नहीं आ जाए। खुद लेके आएंगे, सबको बांट देंगे, घर में पूरे मोहल्ला में बांट देंगे। और जहां प्राण को खतरा है, भय और दहशत का वातावरण है, वहां हमारे ये नए यंग इनर्जेटिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं, हर सप्ताह जो ये वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, इस महामारी काल में शिक्षा की ज्योति जगा रहे हैं। आमने सामने नहीं, फिजिकल नहीं, वर्चुअल ही सही। इसके लिए तो हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज के जो कन्वेनर हैं उल्लास टी साहब, उनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उल्लास साहब, आपने इतना रिलीवेंट समसामयिक टॉपिक को चुना है जो सबको चुभ रहा। लेकिन हम अपने रिसोर्स पर्सन से, चीफ गेस्ट से ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हम सिर्फ इम्पैक्ट पर ही फोकस नहीं करें, बल्कि इस महामारी से, इस इम्पैक्ट से निजात कैसे पाए, समाज को मुक्ति कैसे दिलाए, इसकी भी चर्चा हम लोग आज यहाँ करें तो इस वेबिनार की सार्थकता होगी। क्योंकि सिर्फ समस्या का बखान करें, हर जगह कोविड-19, हर विषय में जोड़ दिया कोविड-19, तो कोविड-19 जोड़ने से नहीं होगा। इसका निदान कैसे हो, विशेष करके चीफ गेस्ट अध्यात्म के माध्यम से इसके निदान के लिए तो सबसे पहले हमको लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अपने रहन सहन को, आचार विचार को, व्यवहार को बदलना होगा। पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को जो हम लोग अपना लिए हैं, उसका परित्याग करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में अब कुछ भी छूने के बाद हाथ धोने की परिपाटी है। हमारे पूर्वज लोग ऐसा ही करते थे, हम लोग इसको भूल गए थे। वही कोरोना हमको याद दिला रहा है। ऐसे तो लंबा टॉपिक है, हमको मात्र 10 मिनट समय दिया गया है। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ज्यादा समय मैं ले रहा हूँ, इसलिए मैं विशेष समय नहीं लेना चाहूंगा। क्योंकि हमारे एक से एक दिग्गज रिसोर्स पर्सन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हैं और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, ये भी बहुत बड़े वक्ता हैं। ये हम लोगों को कुछ बताएंगे। अभी ये मात्र 72 साल के नौजवान हैं, लेकिन ये अपने ही से खुद कहते हैं। मेरी आवाज सुन है कि नहीं सर? मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, ऑडिबल है सर, ऑडिबल है। कहते हैं क्या, इनके जैसे विल पावर की जरूरत है अभी पूरे विश्व को, पूरे विश्व के लोगों को ऐसे विल पावर की जरूरत है कोरोना से लड़ने के लिए। इनका कहना है कि कोरोना मेरे पास क्या आएगा, मैं कोरोना को खुद भक्षम कर जाऊंगा, राक्षस बन करके उसी को खा जाऊंगा। आप देख रहे हैं इनका चेहरा। अभी जो बैठे हुए हैं, जहां वो बैठे हैं, उस इलाके का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ठाकुर अनुकूल चंद जी का। ये अब चेहरा ही बताएगा कि 72 साल की अवस्था में ये बिना मास्क के इलाके में घूमते हैं। कहते हैं कि मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल, जीने की शैली ऐसी है कि कोरोना वाकई इनका कुछ नहीं कर सकता है। तो अब पूरे विश्व को इनसे संदेश लेने की जरूरत है कि अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ला करके, आचार व्यवहार में, विशेष करके मेंटल रिवॉल्यूशन करने की जरूरत है, जो अभी देश में विद्यमान है। हर जगह भ्रष्टाचार, अत्याचार, शिक्षा का ह्रास। सबसे बड़ी बात एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड। शिक्षा जो है
विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। हॉब्स का कथन है, 3 ही वर्ड है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो ह्रास आ गया है, उसी का परिणाम है कि पूरा विश्व 4 महीने से घर में दुबका हुआ है जान बचाने के लिए। आज पूरे विश्व में रिसर्च चल रहा है कोरोना वैक्सीन पर, मेडिसिन पर। खैर भारत का मेडिसिन तो होता भी नहीं है, लेकिन सारे वैज्ञानिक, सारे साइंटिस्ट जो है अभी दिमाग नहीं कर रहा, काम कर रहा है उन लोगों का। ये निश्चित रूप से जरा याद करिए, एक गरीब का बच्चा, माइकल फैराडे को याद करिए। ये गरीब का बच्चा जिसको पढ़ने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, वह विश्व को इतना बड़ा इन्वेंशन करके दे दिया, डायनेमो। वही डायनेमो है कि आज हम लोग बिजली से सारा काम कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो गरीब का बच्चा, तो वो मेरिट उस समय देखिए, और अभी के मेरिट में देखिए कि सारे मेडिकल साइंस, सारे साइंटिस्ट साफ लाचार पड़े हुए हैं। रोज हो रहा है कि भाई अब वैक्सीन निकलेगा तो अब निकलेगा। ये तो सिद्ध होता है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा में ह्रास हुआ है, उसी का ये परिणाम है। नहीं तो पहले देखिए न्यूटन को देखिए, वो मोशन का 3 लॉ निकाल दिया। एक गरीब का बच्चा था, पहले पढ़ाई की व्यवस्था थी। आज इंडिया में हम लोग इसकी भी चर्चा करें, सबसे पहले हम एजुकेशन को सुधार लें, क्योंकि अभी इंडिया में जो ये डिस्टेंस एजुकेशन है, अरे बिहार की तो स्थिति कुछ अद्वितीय है। मैं गया था दिल्ली में प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कोर्स में, तो वो लोग सारे लोग कह रहे थे बिहार की स्थिति तो अद्वितीय है, वहाँ डिस्टेंस तो भगवान भरोसे है। मैं विशेष नहीं कहना चाहूंगा, डिग्रियां बांटी जा रही है, ज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ डिग्रियां बट रही है। तो जरा मित्रों, आज हम लोग इस पर भी मंथन करें कि शिक्षा का स्तर सुधारना है। यदि ये सुधर गया, आज चाइना देखिए पूरे विश्व में वायरस फैलाया, गलवान घाटी में जो है तंबू गाड़ दिया है, देश पर चढ़ाई कर रहा है। तो हम वोकल और लोकल बने, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। कल छोटे छोटे कल कारखाना को लोकल स्तर पर स्थापित करें और उसके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बनाने की व्यवस्था करें, तो हम समझते हैं कि कोरोना से हम निजात जरूर पाएंगे। हमको विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, विशेष करके चाइना का, हम लोग ये भी आशा बांध लेंगे कि उसके गुड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है भारत पर ही बहुत कुछ आश्रित है। यदि यहाँ के लोग चाइनीज गुड्स का बहिष्कार कर दे तो वह इंडिया की तरफ नजर उठाना भी छोड़ देगा, क्योंकि आज यह वायरस वही चाइना की देन है और इसी समय सब जगह वायरस फैला के वह भारत पर, हमारी भारत माता पर आक्रमण करना चाहता है। तो अभी हमारे एनसीसी अफसर भी हैं उल्लास साहब, अपने सभी एनसीसी कैडेट्स को के अंदर देशभक्ति की भावना भी भरने की जरूरत है, क्योंकि वो अच्छा तलाश में। अभी देखिए नेपाल की स्थिति, जो नेपाल सब दिन हम पर आश्रित रहा, भिखमंगा रहा, आज वो अभी मानसरोवर का रास्ता बंद कर देना चाहता है। यानी अच्छा मौका मिल गया है। पाकिस्तान भी तिरछी नजर रखे हुआ है। तो हमको भी थोड़ा ज्यादा हम समय ले लिए, विशेष रूप से इसका क्या इम्पैक्ट है मार्जिनलाइज सेक्शन पर, जो आज का टॉपिक है, बहुत ही सुंदर, समकालीन, रिलीवेंट टॉपिक है। ऐसा टॉपिक चुनने के लिए मैं कन्वेनर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को विशेष करके धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरी बात है कि आप लोग जब से आए हैं, कॉलेज में ज्वाइन किए हैं, पहले तो हम भी 3 साल से हैं। मैं एक सेमिनार के लिए तरस रहा था। मैं 3 साल से मैं ओपनली बोलता हूँ, चर्चा की इसकी नहीं हो पा रहा था। नए लोग आए हैं, वे भी सेमिनार नहीं सही, क्योंकि सेमिनार में तो भाई जान को खतरा है। अभी तो हम लोग 5 आदमी इकट्ठा भी नहीं हो सकते हैं, हजारों की भीड़ भला कैसे जुटाएंगे।
तो इस सेमिनार न सही, समय के अनुकूल वेबिनार की झड़ी लग गई है। हम लोग मीडिया में ऐसे छा गए हैं पूरा। आज देखिए कि हमारे विदेशी लोग लग्जमबर्ग से, नाइजीरिया से जुड़े हुए हैं। मैं विशेष रूप से उनका भी तहे दिल से अभिवादन और वंदन चंदन करता हूँ कि आप विदेश में मेरी आवाज सुनते होंगे। मुझे तो आप देखते होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। यह तरस जरूर है, ये कोरोना का कमाल है। तो यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले वक्ता को, रिसोर्स पर्सन के लिए मैं वक्त देता हूं कि अब आगे का कार्यक्रम उल्लास साहब जारी करें। मैं यही कह करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। Thank you. Thank you, sir. Very good. It Very is good. indeed an honor and privilege to invite our special guest, Professor A.K. Pandey, former HOD, Geography, AND College, for his word of wisdom. Pandey, sir, please. Thank you very much, Mr. Gulaski, and the Honorable Principal, Dr. L.P. Jaswal, and all other resource persons who have been listening to me and and and, and listening other people. This topic, the impact of COVID-19, is a very dangerous topic. The impact is very dangerous. Principal L.P. Jaswal has categorically narrated its economic impact, its social impact, and its psychological impact. I want to endorse. I want to say one story to support the statement of Professor Principal L.P. Jaiswal. मेरा एक विद्यार्थी है, जितेंद्र जायसवाल नाम है, बनिया है जाति का। उसका बेटा आर्मी में अफसर है, पटोरी का रहने वाला है। कुछ वो ज्यादा उम्र का नहीं है, 50 वर्ष की उम्र है उसकी। उसके बाप का नाम पारस चौधरी है। आज से 3 दिन पहले दानापुर अस्पताल में, दानापुर मिलिट्री अस्पताल में कोरोना के कारण उसका देहांत हो गया। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा शर्म हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि कल शाम तक उसकी लाश नहीं आई, दानापुर से पटोरी नहीं आई, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और अस्पताल के पास और भी ज्यादा पेशेंट हैं, वो लाइन लगाए हुए हैं। जो पहले मरे हैं उसको वह दाह संस्कार के लिए भेज रहा है, एम्बुलेंस कम है। परसों जिसका देहावसान हुआ सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है पटोरी से पटना, लेकिन उसकी लाश नहीं आई। दूसरी बात, कि वो मर गया, लेकिन उसके जो गोतियां हैं, उसके जो ओन नेबर्स हैं, कोई उसको देखने के लिए नहीं जा रहा है, कोई उसकी पुछारी करने के लिए नहीं जा रहा है। तो ये सोशल इम्पैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अभी समस्तीपुर में एक RR झा नाम का एक बहुत इमिनेंट सर्जन है, वो कोरोना से मर गया। ही वाज अ वेरी इमिनेंट सर्जन। वो उसकी उम्र 50 वर्ष भी नहीं थी, मेरा बड़ा प्रिय आदमी था। लेकिन मैं उससे फोन से तो पटना में बात किया जब वो अस्पताल में था, लेकिन मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरे पास और भी कई एक कारण थे, मेरे पास गाड़ी की कमी थी, ड्राइवर की कमी थी, नहीं जा पाया। पुलिस जो है सो रास्ते में रोकती है। लेकिन इन उदाहरणों से मैं यह कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो कोविड-19 का समाज में है ही, मार्जिनल सोसाइटी में तो है ही, गरीबों पर तो है ही, औरतों पर, महिलाओं पर तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इसका सोशल इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। प्रोफेसर डॉक्टर L.P. जायसवाल जी ने जो अभी कहा है, यह बीमारी कम और आतंक ज्यादा है। यह इतना बड़ा आतंक है कि बीमारी के पहले ही आदमी मर जाता है। अभी इन्होंने एक उदाहरण बताया कि कोई कोविड-19 से मर गया, इस बात की सूचना पाकर किसी का हार्ट फेल कर गया और वो अभी मर गया। तो ये बहुत बड़ा काल है। और हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, नए लोग हैं, विद्वान हैं, कर्नाटक से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बताएंगे। डॉक्टर L.P. जायसवाल जी ने, प्रिंसिपल L.P. जायसवाल जी ने मुझसे कहा है कि आखिर इससे बचाव क्या है।
और मुझे यह आदेश दिया है कि मैं इसी पर कुछ बोलूं। इसके पहले मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इफ इट इज ए बायोलॉजिकल weapon prepared by the Chinese people or the Chinese government, it is the most heinous crime, more heinous than the Hitler's Holocaust. हिटलर ने जो काम किया यहूदियों को मारने का, उससे ज्यादा घृणित काम ये चीन वालों ने किया है। और ठीक ही कहा है डॉक्टर एल.पी. जायसवाल जी ने कि हमें चीन का हर तरह से बहिष्कार करना चाहिए, चीन के बने हुए सामान का बहिष्कार करना चाहिए, चीन से सारे संबंध को तोड़ लेना चाहिए। और दूसरी बात कि यदि यह मैन मेड वेपन नहीं है, बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, इफ इट इज नेचुरल, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले अनेक बार इस मानवता ने, इस धरती ने महामारियों को झेला है। 1918-1919 में स्पेनिश फ्लू के कारण यूरोप में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन आज भी यूरोप में लोग जिंदा हैं। जब 16वीं शताब्दी में, मध्य 16वीं शताब्दी में, 16th century में, when the Portuguese and Spanish army started to colonize America, यूरोप में बहुत महामारी फैली हुई थी स्मॉल पॉक्स की। Total Europe was infected by smallpox, and the army which started colonization America, they transported smallpox to America, and the immunity system of Red Indian was not known to smallpox. उनमें इम्यूनिटी नहीं थी, स्मॉल पॉक्स से लड़ने की उनमें इम्यूनिटी नहीं थी, और मास स्केल पर रेड इंडियंस मारे गए, मास स्केल पर। ये जो हम लोग सुनते हैं कि यूरोपियंस के द्वारा कॉलोनाइज करने के क्रम में रेड इंडियन से बहुत लड़ाई हुई अमेरिका में, ये झूठी बात है। बहुत छोटी लड़ाई हुई, ज्यादातर लोग तो उस स्मॉल पॉक्स के इन्वेजन से मारे गए, रेड इंडियंस मारे गए उतने ही लोग बचे, वे ही लोग बचे जिनमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी। तो ये कथा क्या कहती है, ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है? स्पेनिश फ्लू से यूरोप बच गया, यद्यपि करोड़ों लोग मारे गए। स्मॉल पॉक्स इन्वेजन से अमेरिका बच गया, आज भी रेड इंडियंस लाखों करोड़ों की संख्या में अमेरिका में पाए जाते हैं। बल्कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनका मेन वोट बैंक और श्वेत ही वहां पर है, रेड इंडियंस ही वहां पर है अमेरिका में। तो ये दो उदाहरण यह बताते हैं कि इफ इट इज नेचुरल तो इससे लड़ा जा सकता है। कैसे लड़ा जा सकता है? अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके लड़ा जा सकता है, अपने शरीर के रोग निरोधक क्षमता को मजबूत बना करके इसे लड़ा जा सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज किस लिए आती है? नेचुरल कैलेमिटीज का कारण क्या है? बहुत सारे कारण उसके हैं। जैसे 1943 में जो सूखा आया था बंगाल में, उसमें 30 लाख बंगाली भाई मारे गए थे। 30 लाख। भात दाल नहीं, मार खाने को नहीं मिलता था। भात का जो मार होता है वह भी नहीं मिलता था। आमा के मार दे, आमा के मार दे, आमा के भातेर फेन दे। मार तो हिंदी भाषा का शब्द है ना, बंगला में उसे भातेर फेन कहा जाता है। आमा के भातेर फेन दे, आमा के भातेर फेन दे। लोग कहते कहते मर गए। 30 लाख से ज्यादा लोग मर गए। तो यह भी जो नेचुरल कैलेमिटीज था, इसको बंगाली समाज ने झेल लिया। स्पेनिश फ्लू को यूरोपियन समाज ने झेल लिया, और स्मॉल पॉक्स इन्वेजन को मिड 16th सेंचुरी में जो वहां हुआ था कॉलोनाइजेशन स्टार्ट, उसको रेड इंडियंस ने झेल लिया। ये तीनों बातें क्या शिक्षा देती है? ये यही शिक्षा देती है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? मेरी इम्यूनिटी खराब कैसे हो गई है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसने मानवता के सोच में परिवर्तन कर दिया। कल कारखाने बनने लगे, उत्पादन बहुत बढ़ने लगा,
और कल कारखाने, उद्योग धंधों से आदमी यह समझने लगा कि इससे अपार उत्पादन करने की इसमें क्षमता है और हमारे भौतिक सुख की पूर्ति के लिए यह पर्याप्त है। तो उसने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया, उसने धर्म को छोड़ दिया, स्पिरिचुअलिज्म को छोड़ दिया। बंगला में एक कहावत है, रविन्द्रनाथ ठाकुर बराबर कहा करते थे कि भौतिक शक्ति नहीं नियंत्र विश्वे, ताकि अंतराले तार शक्ति आध्यात्म की। भौतिक शक्ति सृष्टि का नियंत्रक नहीं है, बल्कि उसके अंतराल में, इस सृष्टि के हृदय क्रोड़ में आध्यात्मिक शक्ति है जो इस सृष्टि का नियंत्रण करती है। ये बिल्कुल विज्ञान की बात है, ये सिर्फ दर्शन नहीं है। अभी जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या कहती है? बिग बैंग कहती है कि देयर वाज ए स्मॉल universe which blasted with a big bang, and the material ejected from the past started to consolidate, और तारा मंडल बनने लगा, मंदाकिनियां बनने लगी, ग्रह बनने लगा, उपग्रह बनने लगा, आदि आदि यूनिवर्स बढ़ गया। और न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी, उसकी जो पुस्तक है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसमें उसने कहा कि the mechanism of universe is so complicated that it is very difficult to comprehend it, and we scientists now are forced to comprehend that God has created this universe. ये न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका में कहा था। लेकिन ये जो एक नया एस्ट्रोफिजिसिस्ट आया, स्टीफन हॉकिंग्स, 2013 में उसकी एक नई किताब आई, इस किताब का नाम है द ग्रेट डिजाइन। उसमें वो कहता है कि देयर इज ए फिजिकल फोर्स इन नेचर, देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर, एंड द फिजिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैव ए कैपेबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड टू कंस्टिट्यूट many universes, many planets, many satellites, many stars and many galaxies। ये वो कहता है, लेकिन ये भूल की बात है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारी परंपरा कहती है, और बिग बैंग थ्योरी का जो इनिशियल स्टेज है वह भी कहता है कि देयर वाज ए लिटिल यूनिवर्स, देयर वाज ए स्मॉल यूनिवर्स, और उसमें विद ए बिग बैंग उसमें जो है ब्लास्ट हुआ, और वह जो है विभिन्न ढंग से विभिन्न तारे मंदाकिनियों के रूप में कंसोलिडेट करता जा रहा है। तो ये जो इनिशियल जो ब्रह्मांड था वो किसने बनाया? जिसको कि कॉस्मिक एक कहा जाता है, प्रिमोर्डियल एक कहा जाता है, सुपर कॉस्मिक एक कहा जाता है, उसको किसने बनाया? उसको स्टीफन हॉकिंग साहब ने बनाया, रॉबर्ट पेनरोज ने बनाया, ये नए नए जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बनाया, हमने बनाया, जयसवाल साहब ने बनाया। तुम जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो, हुलास टी, वो बनाया हो। इसको किसने बनाया? इसको ईश्वर ने बनाया। इसलिए रवि बाबू कहते थे कि भौतिक शक्ति नहीं नियंत्र विश्व, ताकि अंतराले तार शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही नियंत्रक है। और अब फिजिक्स भी इस बात को मान रहा है। when matter can be deciphered into a spirit and a spirit can be condensed into matter, और फिजिक्स तो इस बात को मान रहा है। इसीलिए वह जो क्वांटम थ्योरी का जो जन्मदाता था, उसने कहा कि ये क्वांटम थ्योरी जो हमने कहा ये गलत हो गया, इट इज अ थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस है। अब जैसे एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि औद्योगिक क्रांति के बाद ये सारे चिंतन समाप्त हो गए, सिर्फ भौतिकता की ओर हम भागने लगे। अब क्या हुआ कि इसके कारण, कल कारखाने से उत्पादन के कारण बहुत तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू होने लगा। कोई भी चीज अछूता नहीं रहा। जल का दोहन होने लगा, धरती का दोहन होने लगा, मिनरल्स के लिए खान, कोयले के खान का, पेट्रोलियम का और विभिन्न मिनरल्स के खान का बड़े पैमाने पर दोहन होने लगा। समुद्र में मछलियों का दोहन होने लगा। कोई भी अछूता नहीं रहा। जल जीवन जंगल सभी त्रस्त हो गए। तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया।
प्रकृति अपने को संतुलित करने के लिए विभिन्न कठोर कदम उठाती है। कभी हमारा हमारा विज्ञान कहता है, ज्योग्राफर्स कहते हैं, ये जो क्लाइमेटिक चेंज है या जो इंजूरियस गैस बढ़ता जा रहा है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैस बढ़ते जा रहे हैं, उससे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि कहीं सूखा आ रहा है, कहीं बाढ़ से तबाही है, जहां पर कभी वर्षा नहीं होती थी वहां वर्षा हो रही है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में घनघोर वर्षा हो रही है। अरब के रेगिस्तान में बर्फ गिर रहे हैं। हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले 5 वर्षों में धरती का 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? संतुलन बिगड़ रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इस भौतिकवादी चिंतन के कारण, इस भौतिकवादी कथन के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। और प्रकृति का जब संतुलन बिगड़ रहा है तो प्रकृति अपने को संतुलित करना चाहती है। एक माने लॉ ऑफ आइसोस्टेसी क्या कहती है कि वह धरती अपने को संतुलित करना चाहती है, उसी तरह प्रकृति भी अपने को संतुलित करना चाहती है, ब्रह्मांड भी अपने को संतुलित करना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक पिंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर के अंग प्रत्यंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाथ का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, पैर का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, इस हृदय का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, पेट का अलग है, जांग का अलग है, लेकिन सभी एक से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार इस निखिल ब्रह्मांड में यद्यपि ग्रह नक्षत्र सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात हम भूल गए। हम में फेलो फीलिंग समाप्त हो गई। हम अपने बाप की कदर नहीं करते हैं, अपने माता पिता की कदर नहीं जानते हैं, अपने भाई के साथ मोहब्बत नहीं करते हैं, अपनी जाति के साथ मेरा मोहब्बत नहीं है। उल्लास सर का माइक म्यूट हो गया। जी, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। सर हम लोग मतलब अगर ऐसे हो तो वी कैन स्टार्ट विद द टेक्निकल सेशन सर। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, सर डिस्कनेक्ट हो गए। आगे कंटिन्यू करते थे। तो सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर। हेलो, मेरी हाँ सर। मेरी हाँ आवाज सर। सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि भौतिकवादी चिंतन के कारण, भौतिकवादी चलन के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और प्रकृति अपने को संतुलित करना चाहती है। प्रकृति के संतुलित करने के क्रम में प्रकृति कठोर कदम उठाती है। हमारे शास्त्र में है ना, विषय से विष भोजनम, विष को दूर करने के लिए विष ही दिया जाता है। वही बात प्रकृति भी कर रही है। जिस रास्ते से तुमने प्रकृति को असंतुलित किया है, उसी रास्ते से प्रकृति अपने को संतुलित करने के लिए तुम्हारे ऊपर शासन कर रही है। ये बाढ़, ये सूखा, ये अग्निकांड, ये महामारी उसी का लक्ष्य है। और तीसरी एक इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भौतिकवादी चिंतन के कारण, आध्यात्मिकता को छोड़ने के कारण हम में मानसिक प्रदूषण आ गया है। लोग एयर पोल्यूशन की बात बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन की बात बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन की बात बोलते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरनाक बात है कि हमारा मेंटल पोल्यूशन हो गया है। और पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और मोस्ट ऑफ द इंडियंस आल्सो इस बीमारी से ग्रसित होता चला जा रहा है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, 1941 की जनगणना के अनुसार
भारतवर्ष में 71% आदमी नॉन वेजिटेरियन था, ये सॉरी वेजिटेरियन था। उस समय पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में जब पाकिस्तान अलग हो गया 71% आदमी नॉन वेजिटेरियन है। सोच में यह परिवर्तन हुआ है, और आप समझ सकते हो। हमें यह तमीज नहीं है कि हम बकरी को काटते हैं, मछली को मारते हैं और जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। उस हत्या के समय में उसके प्राण में कितना आर्तनाद होता है। मरने के समय अगर आपको गला काटने लगे कोई, तो आपकी क्या स्थिति होगी? क्या उसमें जीवन नहीं है? और उस आर्तनाद के कारण प्रकृति उसे सुनती है और प्रकृति कांपने लगती है, उसमें क्षोभ सृष्टि हो जाती है। उसका दंड आपको मिलेगा। मेरा एक बेटा आर्मी में बड़ा अफसर है और अभी चीन बॉर्डर पर लड़ रहा है, और सबसे पहले नाकुला में जो चाइनीज आर्मी को मारा था, मेरे ही लड़के की यूनिट ने मारा था। मेरा लड़का तो बड़ा अफसर है, लेकिन उसके साथ जो अटैच दूसरे छोटे छोटे ग्रुप है, जैसे आसाम राइफल्स है, 9 राजपूत है, 7 बिहार है, उसमें से एक लड़का जो बिल्कुल अभी फर्स्ट पोस्टिंग उसकी हुई थी, समदास उसका नाम था, आसाम का रहने वाला, बंगाली है। उसको जब उसने कहा चीन के मेजर ने, दिस इज माय प्लेस, चलो गेट आउट, भागो यहाँ से, मारा ऐसा छापर 3 भटकुनिया खाया, उसका दांत झड़ गया। सबसे पहले ही हुआ था। अब बताओ कि फोर्स हो, कसरत करते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, एक के छापर में तुम नीचे चले गए और एक छोकरा मारा, क्यों ऐसा हुआ? मेरा लड़का कहता है कि चाइनीज फोर्स कांट फाइट, दे हैव नो कैपेबिलिटी टू फाइट। वो कहता है कि लड़ाई तो हम हथियार से लड़ते हैं ना, लेकिन विजय तो उल्लास से मिलती है, हौसला से मिलती है। विजय के लिए तो मनोबल चाहिए ना, वो मनोबल उसमें है ही नहीं। अभी जिसकी चर्चा हमारे प्रिंसिपल साहब कर रहे थे, गलवान घाटी में 16 बिहार के साथ जो ये कांड हुआ, जो आंध्र प्रदेश के संतोष बाबू को जब धोखा देके मार दिया, तो 16 बिहार के सारे बिहारी पागल हो गए और अपने कमांडर की बात नहीं सुनते थे, बिल्कुल डिसोबे कर दिया और गर्दन मरोड़ के 128 चाइनीज को मार दिया। ये मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरा बेटा खुद आर्मी में है। मैं यह कहना चाहता हूं, लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बताओ कि तुम मारते जाओगे हमको, हम चुपचाप सहते जाए, तो भैया ये 900 वर्ष से तो सहते ही आ रहे हैं, अब कितना सहे तुम्हारे मार को, तुम्हारी बात को मैं कितना सहूं, जरा बताओ। है हेलो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्रकृति भी वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कर रही है। ये मानसिक प्रदूषण, ये भौतिकता के कारण उपजी हुई बीमारी अनेक बीमारियों को जन्म देती है, अनेक विषाणुओं को जन्म देती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं, यद्यपि यह टॉपिक का विषय नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने आदेश दिया है कि इसका निदान क्या है, तो निदान से जुड़ी हुई है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट किंगडम में हम देखते हैं, एनिमल किंगडम में हम देखते हैं कि सुपीरियर स्पर्मेटोजोआ fertilizes the inferior ovum. We don't allow our superior cows to be crossed with an inferior bull. We don't allow our superior kutia bitch to be crossed with an inferior dog. मतलब कि उच्च बीज गुण वैभव का महत्व एनिमल किंगडम में हम व्यवहार करते हैं, और ये प्लांट किंगडम में जो क्रॉसिंग हुई है, जिसमें मेंडेलियन थ्योरी है, कैसे क्रॉसिंग हुई है जानते हो? एक मैचुरिन नाम का एक चीफ हॉर्टिकल्चरिस्ट था रूस में, उस समय स्टालिन का राज था, रूस में बहुत घटिया किस्म का सेब होता था। उसने कहा, स्टालिन ने अपने चीफ हॉर्टिकल्चरिस्ट को, कि मेरे पास रूबल नहीं है, मैं अमेरिकन डेलिशियस सेब को ज्यादा आयात नहीं कर सकता हूँ, तुम एक अच्छा सेब पैदा करो ताकि फॉरेन रूबल बचे। उसने क्या किया कि अमेरिकन डेलिशियस सेब जो उस समय का सबसे अच्छा सेब था, उसके
स्टिग्मा को उसने लिया और रशियन घटिया किस्म के सेब के पॉलन को लिया और उसको क्रॉस करा दिया। मतलब निम्न गुण संपन्न शुक्राणु को लिया और उच्च गुण संपन्न ओभा को लिया, उसको क्रॉस करा दिया। उससे जो सेब पैदा हुआ वह रशियन घटिया किस्म के सेब से भी घटिया हो गया। स्टालिन बिगड़ गया, वो तो बड़ा देशभक्त था, बिगड़ गया, कहा कि इतना रूबल खर्च हुआ, सारा तुम्हारा रिजल्ट 0 हो गया। तो कहा कि माई बाप, हम तो रिसर्च करने के मालिक है ना, रिजल्ट के तो मालिक नहीं है, लेकिन एक मौका मुझे और दिया जाए। दोबारा उसने क्या किया कि अमेरिकन डेलिशियस सेब के पॉलन को लिया और रशियन घटिया किस्म के सेब के स्टिग्मा को लिया और उसको क्रॉस कराया। उससे जो सेब पैदा हुआ वह अमेरिकन डेलिशियस सेब से भी अच्छे किस्म का सेब हो गया और रूस वाले इतने उपकृत हुए इस शोध से कि उस सेब का नाम मैचुरिन एप्पल रखा, आज भी पाया जाता है। इसके बाद बहुत रिसर्च उसने किया, ब्लैकबेरी पर किया। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिया। We don't allow our superior cows to be crossed with an inferior bull, and we don't allow superior pollen to be crossed with a inferior stigma. We don't allow superior stigma to be crossed with inferior pollen in plant kingdom. ये कथा क्या बताती है? ये कथा यही बताती है कि हमारे विवाह संस्कार को ठीक होना पड़ेगा और ये मनमाने ढंग से जहीं कहीं जो इंटरकास्ट मैरिज की बात हो रही है, जिसमें इंफीरियर स्पर्मेटोजोआ सुपीरियर ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है, या विज्ञान की भाषा में कहो कि लेस इवॉल्व्ड स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेस मोर इवॉल्व्ड ओवम, इट इज एन आउटरेज टू द नेचुरल लॉ। इफ ए लेस इवॉल्व्ड स्पर्मेटोजोआ fertilizes a more evolved ovum, it is an outrage to the natural law। और उसका तो कुप्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें विषाणु पैदा करती हैं। मानसिक प्रदूषण, वैवाहिक गड़बड़ी, ये सब विषाणु पैदा करती हैं और इससे होने वाले नुकसान का, इससे होने वाले संहार का कोई जोड़ा नहीं है। मेरे गुरु ने कहा है जो भयानक संहार आ रहा है उसके सामने ये फर्स्ट ग्रेट वर्ल्ड वॉर और सेकंड ग्रेट वर्ल्ड वॉर के समय होने वाला जनहानि बिल्कुल कुछ नहीं है। इतना भयानक हो रहा है, आज वही हो रहा है भैया, आज वही हो रहा है। कौन कहाँ है, कहाँ मर जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। WHO कहता है कि दिसंबर 2020 तक भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कोरोना से पीड़ित हो जाएगी। ये मजाक नहीं समझो, इन बातों पर गौर करके विचार कीजिए। आप सभी विद्वान हो, मैं हाथ जोड़ के आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि रवि बाबू कहते थे कि आध्यात्मिक शक्ति नहीं नियंत्र विश्व ताकि अंतराले तार शक्ति आध्यात्मिकी, इस बात को मानिए। और दूसरी बात कि इसका प्रिकॉशन लीजिए। जैसे अभी आयुष मंत्रालय अनेक काढ़ा की बात कर रही है, लौंग, इलायची आदि, हल्दी आदि आदि का काढ़ा बना करके पीने की बात कर रही है। आप लोग क्यों नहीं पीते हो? दूसरों को पीने के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते हो? ये सेमिनार करके क्या होगा अगर प्रैक्टिस में नहीं है? Education and religion is not only a lesson to be learned, rather it is a practice to be adopted for the betterment of life। आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, खाली भाषण झाड़ते हो, इससे क्या होने को है? इसीलिए प्रैक्टिस में इन बातों को लाओ। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ अग्निहोत्र की प्रथा थी। अभी नेशनल केमिकल रिसर्च लैबोरेटरी पुणे के डॉक्टर RN शुक्ला, मैं नाम बता रहा हूँ, इन्होंने यह साबित किया है, गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार ने इसको साबित किया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऋषिकेश ने इसे साबित किया है, प्रणव पंड्या जो गायत्री शक्तिपीठ के आज अभी डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसे साबित किया है। वो विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय ऋषिकेश, उसने वह भी विश्वविद्यालय LNMU की तरह, कर्नाटक विश्वविद्यालय की तरह। इन लोगों ने यह साबित किया है कि गोबर में, गौ के गोबर के कंडा में यदि अरवा चावल, जौ, तिल आदि आदि मिला करके, गौघृत मिला करके यदि जलाया जाए
जलाया जाए, उससे जो धुआं निकलता है वो 1000 विषाणुओं को मारता है। क्यों नहीं इसका अभ्यास करते हो आप? यही तो हमारे यहाँ अग्निहोत्र था। प्रत्येक द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी, द्विज मतलब जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। प्रत्येक द्विज जिसका दोबारा जन्म हुआ है, अभी जैसे एलपी जायसवाल है, डॉक्टर एलपी जायसवाल, प्रिंसिपल एलपी जायसवाल वैश्य वर्ण में पैदा लिए हैं, लेकिन संस्कार से वह जो है द्विज है। द्विज मतलब उनका दोबारा जन्म हुआ है, द्विज माने जिसका दूसरा बार जन्म हुआ है। तो यह संस्कार से जिसका 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 व्यक्तित्व निखरता है, उन सबों को इसे आचरण में लाना चाहिए और दूसरों में भी प्रचारित करना चाहिए। एक विक्टोरियन प्रोवर्ब है, an ounce of prevention is worth than a pound of cure. An ounce of prevention is worth than a pound of cure. आप इस बात का अभ्यास करो, प्रिवेंशन का अभ्यास करो, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रिवेंशन का इस्तेमाल करो। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। जय गुरु, नमस्कार। आप सबों का कल्याण हो और आपने जो यह प्रयास किया, क्या जो है सो समाज में यह जो है सो कुछ फल लावे, मैं दुआ करता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir. আমি তো বাংলাও জানি, কিন্তু কিন্তু We shall now move to the technical session. I would like to introduce our first speaker of the day, Dr. Archana Kujur. She is Assistant Professor in Department of Geography, Central University of Karnataka. She is specialized in child health and nutrition, gender issue and historical demography. She received her PhD from International Institute of Population Sciences, Mumbai. Dr. Kujur recently completed UGC UCRI research project with the University of Cambridge, UK. She has visited countries like UK, South Korea, Thailand, Morocco for academic purpose. Her research work has been published in various international and national journals, and she attended several conferences in India and abroad. I request Dr. Archana Kujur to share her thought with us. Madam, please. Madam, unmute Thank you, कीजिए. Dr. Ullas. Thank you. Yeah. So thank you for giving me this opportunity to share some of my observations on COVID and its impact. So I would like to talk about women. Women as a whole is not a marginalized community, but there are sections of women who are going to face more crisis than others. So without any further delay, let me start the presentation. So first, these are the various factors which are going to be affected in terms of women, and these are the different issues which actually we will see that there are other people also who will get affected. So largely there will be an effect which is economic in nature, then on the health system, and then on the health and well-being. So today I'm going to talk about some of these issues because it will take a lot of time to discuss all the other issues. So I will only focus on few of them. So first, let us try to understand that why we have to talk about women. So as all of us know that you can see a population pyramid right here, and you can see that half of the population comprises of females. So it is also meaning that 50% of the human resource consists of females. And any impact or implications on women have larger implications on the family and their children, especially on the upbringing of the children. So that's why it's important to understand what is the situation of women during this COVID. So first I'll start discussing about education, then I will move to discuss about the employment, and then we'll talk about violence within the house and a little bit about the health access during COVID. So this is the situation of education of women currently. So this is the data which I have taken from NFHS, and you can see very clearly that there are 28% of women who have never gone to school, as against 12% of male who have not gone to school. That means there are a larger number of women who, in normal situations, are not having access to any education.
So median years of schooling, you can see again here, the median years, the gap between boys and girls is very high. It is 6.9 for boys and 4.4 years for girls. Now, these women, they specifically belong to rural areas. Many of them belong to SC, ST or OBC caste categories, and most of them also belong to poor families. So these are the different women from different stratas which are actually having poorer education as compared to other women. We'll also find that most of these children, this is the data for children actually, school going children, and we find that most of them are not able to attend school because of housework or cost of schooling or because they got married. Now, what does this mean in terms of COVID? So first, I would like to present the global scenario. So here you can see that over 89%, they are out of school. So actually, most of the schools across the world have closed because of COVID. That means most of the children were out of school for about 3 months, and only now that in some countries, the schools are reopening. So we can see that that means about 1.5 billion children and youth, and in that, almost 743 million girls are included. The highly affected countries are the developed, not the developed, the underdeveloped and developing countries. So you can see here Nigeria, Mali and Sudan are some of the countries which are affected, and India as well is affected. We'll show you shortly here. 248 million children in India were enrolled in elementary school, and 28 million children in the Anganwadi centers are there. So these are the additional children who are out of school now. And even before COVID, there were about 6 million girls and boys who were already out of school. So here I'm showing you a graph. So I have taken this from UNICEF. You can see that in February, when the pandemic started, only China and Mongolia, they were closed because it had not spread to other countries. And only about 1% of the total learners were affected. But gradually, we find this is a graph for April, and you can see that most of the countries around the world, they have closed down, and about 90.1% children are out of school. Okay, there are exceptions being some of these countries which have reported that there are no cases of COVID. And now, this is just a few days back, you can see that some of the countries like Australia, you can see here Greenland and Sweden and Norway, some countries in Africa. So they have reopened after successfully controlling the COVID situation in their countries, and about 60.90 children are still, they are affected because many countries are still closed, including our country. So next, let me talk about access to nutrition. So why talking about access to nutrition is important, because you must understand that in our country, there are large number of children who are malnourished or undernourished. So they suffer, a lot of them suffer from what is called as wasting. And this is one of the major cause of deaths under 5 in children. So the strategy taken up by the government to produce or to provide nutrition to these children is through midday meals and through Anganwadis. So during this time of COVID, when the schools have closed down, so these children do not have access to that food which they used to get at least once in a day. So this includes mostly the children who are underprivileged. So here we can see in this map, you can see that in India, this is almost over 10 million children are affected. So these are the children who were getting meals in the Anganwadi centers or the midday meal, but now they are not able to get it because of the closure. So in this is the number for India, and in that almost 52% are girls. Now, what happens is that in India, the government is giving rations to the children at home. So now, since they are out of school and then they are not able to get that midday meal or the nutrition, extra additional nutrition, which they get out of the house, so they are being given rations to the household. But when the ration is given to the household, the intra allocation of food, that means within the household, the allocation of food may not reach to the children who may require it. So because it may get distributed unevenly or may go to somebody who is of a different gender, etc.
Now, what is going to be the impact of school closure on children? So, economic stress on families give rise to financial constraints, which can reflect in increased absenteeism of female children from school. So, as we all know that the country is going through huge economic crisis, that means people will be having lesser income in their hand. That means lesser money. So, one of the child would be having to compromise on going to school because of the fees, which we learned that already this problem for many girls. And it could also be based on the birth order of the child, means maybe the eldest child may have to compromise or the youngest child may have to compromise, but in most cases it is the female child who has to compromise in situations when they have more than 3 or 4 children. In case of adolescent girls, we find that many of them would be married off because of school discontinuity. Okay, so because the mindset is that they have to get married sooner or later. So now, because of the discontinuing education, so it would be a good opportunity for the parents to marry them off and also lessen some of the burden that they have because of the adolescent daughter. So once the schools reopen, female children may have to stay back at home further to take care of younger siblings who would be at home or to help in household economic activity. So because of the economic losses that the families had to undergo through this entire period, so these girls or children may have to stay back to help their parents, especially in rural areas where there is not only requirement of manpower in the agricultural fields or other household activities. So these increased absenteeism lead to school dropout eventually. So these phenomena are not something which are new. So these phenomena are something which have already been existing in our country, and these are just going to get more exaggerated due to the crisis. Now, the study also says that pandemic can reverse about 20 years of gains made for girls' education, especially for the adolescent girls, because they are the ones who are having a higher risk to violence. They are the ones who have higher risk of getting married off. So this impact is not seen as much among the children who are in primary school, but this is seen more in the girls who are of the age 15 to 17. So here I want to talk about online mode of education. So now the girls or the children who have access to online education. So what happens with them? So UNICEF reports have indicated that approximately only a quarter of households, that is just about 24%, have access to internet. So in places where there is no internet access, so these are the children who will be missing out on school and school learning because they do not have internet connection. And in case of India, it's only about 24%. And in this, there will be a large rural urban gap. You'll find that many of the people in the rural areas may have phone connections, but the connections would not be adequate or strong enough to allow the student to access the online class. Many of the rural people may not be having smartphones. I don't say that most people don't have, but there will still be many who would be not having smartphones. So if in a household there is no one with a smartphone, then the child cannot go for online classes. If there is one phone, then there will be a competition for resource. So it depends on the family that to whom they choose to give the phone to access online education. And that is also going to vary as per the gender. Because what happens that in rural areas as well as in urban areas, I think male child is seen as the one who is going to fend for the family once they grow up, they have jobs. So I think it is normal in the society to give preference to him. So I think mostly it would be the male child who would be given preference over the female child, if there are children of these two genders. And then there is another issue about the teachers' perspectives because of the sudden shift. So that actually would hamper the learning process of the children. So education was a very important criteria for employment because that ensures employability. So now let's see what happens in case of employment. So here you can see this is the data of 2015. So here you can see the entire graph, and you can see that India, the female labor force accounts for only 24%. This was in 2015. And we find that it is only higher than some of these countries, which is Pakistan and
Saudi Arabia, and some countries in Africa. Apart from that, most of the countries around the world, they have more percentage of female in the labor force. So this was 24% in 2015. So what happens here? So due to pandemic, gender equality in the workplace will close in another 50 years. So in the last 50 years, some equity in the workplace has been achieved between the male and female. And World Economic Forum says that it will take another 50 years for this global or gender equity to come about. But what happens due to pandemic? The pandemic actually increases the vulnerability of the women to lose jobs. So like here, right here, you can see female jobs are 19% more risk than the male ones because the sectors such as the accommodation, food, retail, and manufacturing who have more number of women working in them. So these are the sectors which have been much affected because of the pandemic as opposed to other sectors. So here, if these women have to leave the job, so it will the workforces in these industries will be more women. In Central America, for example, 59% of women are employed in those sectors, while in Southeast Asia, it's 49%, and in South America, it is 45%. Now let's look at the data for India. So here, in normal situations, so this is the data of 2018, so we would find that girls who are employable between age 15 to 24, of them, 48.3% are unemployed, as against 14.3% males. So this is a normal situation before pandemic. And in fact, I must inform that in 2015, the number of females or the percentage of females who were employed was 24%, which reduced to about 20% before the pandemic. So here you can see that this is the actual figure in numbers. Here, the proportion of women is very less as compared to men. And again, here also it is very less. But we also see that in that smaller proportion of women, there is this higher percentage of women who are going to lose jobs. So in the first place, the number of women who are employed is less. And in that, a higher percentage of them are going to lose jobs because of the pandemic. So now what happens once the pandemic is over and women wishes to come back to work? So studies have proven that women took longer to return to work after the last turndown. This is partly because crisis tends to reinforce the idea that men are responsible for putting bread on the table, whereas women take care of the family. So they are expected to take care of the family even when the pandemic is over. So they may not be able to return back to employment, to waged employment, even after the pandemic. So even the International Labour Organization, they have shown that women more often lose jobs in this situation as compared to men. And so this has happened before. So these are some of the observations which are made in the study where they point out that men's jobs are typically considered to hold more value in a family. So as we all know that men are considered to be the breadwinners of a family. So it is but obvious that they would be given preference to retain a job. So when a question comes that whether a woman or a man should retain the job, mostly the answer is it is the men who should retain the job because they are considered as the one who brings bread to the table. But what happens is that we forget that there can be many women who are the head of the household and they may be the one feeding the family in absence of their husband. Maybe they are widowed, maybe they are separated. So these are some of the women who will be largely affected because of this, because of the bias of the manufacturing industries or the industries employing them, as well as the short-sightedness of the family in which they live. So third, I want to talk about work from home. So now increasingly all of us are working from home because it is impossible to be working in groups and in offices where people have to come into close interactions. But this work from home creates a very different issue again for the women. So what we mean first by work? Work is something which is when we are paid for it. So all the household work that a woman does is not called as work because
we don't get paid for it. But if we do some work for which we are getting paid, only that is considered in the normal definition of work. So now what happens when people have to start working from home? So when people start working from home, not only that they have to manage the work from the offices, but also to manage the household work. So in this situation, there are studies which show that in South Asia, India and Pakistan particularly, they do not have an equal norms of sharing the domestic duties. So if the male and female both have to work from home for the offices, and yet they have to do the household work. So the normal situation is that the woman has to take more time to do the work as well as to manage the work along with the office work that she has to do from home. This in turn hampers her quality of work. This can also have an impact in the company further thinking about retaining her. So this may not be such a problem for people working in the government sectors, but it may create or pose more problems for people working in the private sector, where they have to have a competitive spirit and a competition along with their male co-workers. But then they are burdened with additional household work. No, we don't have any survey pertaining to India. So this is a survey which is pertaining to US, which was conducted recently. And here we find that even in US, 70% women say that they are fully or primarily responsible for the household work. And 66 women percent say that they are primarily responsible for childcare. So these are the normal proportions which the amount of work which women do at home. So during pandemic, we would really think that the male contribution to the household work also should have increased, because both of them have to do the household work as well as they have to do the office work from home. So that would have been the natural normal trend, but we do not see that here. The other thing that I would also like to discuss about the frontline workers, that they are mostly women and therefore they are primarily at risk. So first, women are at risk to get infected from COVID because even at home, they are the primary caretakers of any person who is ill, firstly. And secondly, they are also the proportion of women who make up these frontline workers is also 70%. So here you can see that they make up 70% of the health and social services globally. Here, this blue line is nurse and midwives, pharmacists, dentists, and physicians. So this is the data for 57 countries. This is coming from a WHO report. And so these are the women who have been working from January across different countries as the frontline workers, taking care of the patients, not only in the hospital, but also at home. These are the ones who are at higher risk through and through throughout this pandemic that is going on. And next, I want to talk about access to health service. So what happens to women during this time? So the most important area where the woman is getting affected is child and reproductive health. So as we can see here that because of pandemic and the closure, there has been a movement restriction, there has been a loss of income, there has been concerns of COVID transmission. But women who are pregnant, who are expecting, or who have smaller children, they have to visit doctors, they have to visit hospitals. And it becomes a concern for them because hospitals are the places from where there is a very good chance, a very high chance that the woman and the child may get affected. But the need is so much that they have to go. But even if they go to the health centers or the hospitals, we find that many of them are not able to find an access to a good doctors. We do not find that they are not getting place in the hospital or time from the doctor or the medicine that they require because of the excessive attention that has been diverted towards treating people with COVID and COVID infection. So the care or the healthcare need that the woman and the child is going to have is actually reduced because of the shift in the attention towards the COVID. So we can see some of the news clippings here.
We have seen this every day in the newspaper when women are not given admission in the hospital, they are giving birth in an auto rickshaw, they have given births in their trains, they have been carried on trolleys to the hospitals and other things. So this is because of the excessive shift in the focus on corona patients rather than there should have been some focus for these women also where they could access healthcare. So these are some of the things which we see per day. So we can see here that the health management information system, it fell by about 32% from December to March in India. Lockdown has prevented 1.85 million Indian women from getting an abortion. And during this very period, 47 million women in low and middle countries have or could not access modern contraceptives. So this is an area where the woman can also risk herself so much so that it can also cause her death. So evidences from past epidemics indicate resources are often diverted from routine health services, and this further reduces the already limited access of many girls and young women to sexual and reproductive health services, as well as maternal, newborn, and child health services. The COVID-19 pandemic must not be used as an excuse to restrict or roll back girls and women's access to essential sexual and reproductive health rights, which must continue to be prioritized, funded, and recognized as life-saving. The last topic that I want to discuss is about the violence which women and children equally have faced, not only in India, but in various parts of the country. Across India as well as various parts across the globe. So experiences show that domestic sexual and gender-based violence increased during crises and disasters. So this kind of experiences have been seen in Africa during 2014 and 16 during the Ebola breakout, in 15 and 16 during the Zika epidemic, and it appears to be happening right now because of COVID. Under conditions of quarantine or stay-at-home measures, women and children who live with violent and controlling men are exposed to considerable great danger. So these kind of situations were reported in France, where the government set up helplines for these women to get out of the households where they were experiencing violence. And similar situations we also find in India. So Childline Services, they have received more calls in the 21 days from March 20 to April 10, which is about a 50% increase than the regular calls that they receive. And nearly 10,000 of these were intervention cases which required Childline staff to reach to children. So these were mostly related to violence, sexual abuses, child marriages, and child labor. So we see this phenomena not only in India, but across the world. And governments have reached out to these people who need protection during these times. So this was the pamphlet which was given out by the WHO, how to keep yourself safe during the time of violence. So why the situation of women and girl has been like this? So these factors or these ranges from different quality quantity trade-off, economic factors, because of family size, kinship systems. So they have to some extent maybe facilitated them, but this process is extremely complex and they are interwoven deeply with the socioeconomic factors. Therefore, pointing out to a particular reason why this is happening or why this the current situation is difficult to assess. So what we can conclude from here is that economic challenges during the outbreak pose a serious threat to young women's work and business activity and expose them to risk of exploitation and abuse. Girl and young women facing severe economic shocks are more likely to take on high-risk work for their economic survival. Response to outbreak must protect and support young women's economic empowerment and recognize the additional burden of unpaid and domestic work on girls and women. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for very insightful and enlightened speech. We will go ahead and take some time for. Just remember, please be sure to type your question into the chat box on your YouTube live.
सर कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है क्या? Yeah, madam, we can share it from here only. मैम, Madam, वेरी गुड Archana आफ्टरनून madam, मैम. is it that visible for you? Yeah, I can see something. Yeah, ma'am, that's the question. I see same problem. Yeah. Okay. So actually, what we are talking here about is the measures to develop dependency among the marginalized group. I think it's the first and the foremost thing is that there has to be an increased investment in education, because education is something which makes a person eligible to think and to get jobs. So for the marginalized communities as well, education is a basic need or necessity, be it from any sections of the society. So only once when you get the basic education up to even the higher secondary, that is from where we can think of providing trainings, like which has been happening in the past few years. So when we're talking about Make in India, or we were talking about giving various kinds of trainings to people. So for that, first and foremost thing is that at least secondary level education is important, and along with that, a training for different jobs, because it's not required that everybody has to have a higher education, because higher education may be reserved for people who want to go into higher academics and places like that, but not everybody can go for higher education. So I think more emphasis has to be given on giving trainings like parlor trainings, mechanical training, training for carpentry, so that a person can go into working soon after he or she can complete those kind of training. Thank you, ma'am. One more question. Yeah. Okay. So the solution, so this is the tricky part. Uh, the women's situation in this lockdown is not something which is happening only now because of the COVID. It's a situation which has been existing even before the COVID happened. So this actually, the government is slowly trying to address this issue, but because of the COVID, the exaggeration of this situation has happened. So it is not something solution which can be given only for the pandemic. It is a situation which has to be implemented in the long run. Like in the past many years, government has made improvements in being able to provide education to many girl children. So the enrollment of girl children in education, not allowing them to drop out of the school, is another thing. Many steps have been taken to retain them in the school and avoiding child marriages at the age of about 15 or 17. So these are some of the steps which actually have to work eventually to uplift the condition of the women. So it is not something which can be done, but right now also government is providing facilities wherein if women and children are facing violences or violent situation and they cannot stay back at home, so they can be taken out from those places and put into some safe area or safe place where they can save themselves from the violent incidences that are happening in their houses. So there are two types of interventions which can be done. What is the long-term intervention, which is already happening gradually, and then the short intervention maybe only for the COVID situation. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Shakti, is there any other questions? Education is only to get jobs. Yes, sir. Education is only to get jobs. What No, is the no, meaning of education? I'm not talking about getting jobs, sir. I'm just saying that it makes them more eligible. They are able to decide for themselves. It makes them independent. It helps them to understand what they want in future. To develop its own faculty. Yeah. Thank you, ma'am. Let me introduce our next speaker, Dr. Sanjit Sarkar. Dr. Sanjit Sarkar is also an assistant professor in Department of Geography, Central University of Karnataka. His area of specialization is in population studies and demography. He received his PhD from International Institute of Population Sciences, Mumbai. His research work has been published in various journals of international and national repute.
He attended several conferences in India and abroad. Received many awards too. Sir, it's a pleasure to have you with us here today. Over to you, sir. Sanjay, sir. Sir, Sanjay, sir, Hello, unmute Dr. कीजिए. हाँ, sir. Yeah, Yes, sir. hello, Yes, Dr. sir. Ulash. Continue, sir. Am I Yes, sir. am I audible? Yeah. Yeah, it's audible, sir. Continue. Okay, okay. Not Actually, visible, only audible. I'm facing lots of. I actually kept it off. This video, I kept it off because of the low connectivity. Okay, sir. Anyway, thank you so much for organizing this talk, and uh, I would like to express my thanks to all the dignitaries, Dr. LP Jaswal, principals of this BRB college, and Professor Ashok Kumar Pandey, my colleague Dr. Ulash, and organizing committee's member. Actually, I had a well-documented PPT, but due to low connectivity and networking issue, I am unable to share the PPT. But however, I would like to sum up the whole summary. But if I'm audible right now, am I audible clearly? Yes, yes, you are audible, sir. It's clear. Okay, then I may continue now. So in between, if I face any trouble or if my phone get disconnected, I please pardon me. Maybe that may happen because of the very low connectivity. So basically, the today talk we have decided on mainly impact of COVID-19 on the marginalized section. And very beginning, Dr. LP Jaswal and Professor Ashok Kumar Pandey, they have rightly mentioned and pointed out very important points on how the marginalized sections are being impacted by the COVID-19. And my previous lecture, my colleague, she has rightly mentioned that how the women, being a part of the marginalized section, how it has been impacted. So in continuation to that, I'm basically talking on the linkage with migration and its COVID-19 and the COVID-19 pandemic right now. So when I was preparing my research concept about this migration and COVID-19, I had a dilemma that to understand who effect on which, whether COVID-19 impacted on migration or migration impacted on COVID-19. However, I have decided my topic in such a way, like this COVID-19 outbreak and its linkage with migration. And I also wanted to investigate that what are the government policies and government responses are there to mitigate this problem. Before starting my talk, I would like to take you on today's COVID-19 fact as of today. So if we go to the today's COVID-19 fact, you will see almost 1.6 crore of the world people are affected by these COVID-19 diseases. And in India, this figure is almost 13 lakh, which accounts around 0.01% population in India. Of course, the prevalence of India is lower than the world. That is true. But still, the problem is burdening. And if you see the last 24 hours update on COVID-19 in India, you will see that almost 50,000 of the people have been infected newly in the last 24 hours in India. And if you speak on the death happened in India, till now, it is almost 31,000. And in the last 24 hours, it is near about 750 or around.
And if you look in the regional affected pattern in India, the highly affected states in India in Maharashtra, and obviously followed by Karnataka, and these are the states in India are very highly affected in terms of volume and numbers. And in, of course, in world respect, India, right now, as of today, India occupies the third largest COVID infected country with 13 lakh of infected cases, just after America, USA, which is having 40 lakh of COVID infected persons, followed by Brazil. So this is what the today's COVID situation in world and in India. Now, if I want to link this COVID with the migration, then first I have to look into the migration pattern in the world. We need to see that how people are migrating in and around the world. If you take the big pattern of the migration, particularly the international migration, we'll see that out of 7.5 billion people, almost 3.5% of the world's people are defined as international migrants. So that means they live in a country apart from their birth country, and this amount is obviously higher. And if we look into the in which country they go, the migrants' destination country in the world, it is mainly the American and European country. And then which are the migrants' residence country? They are mainly, India, Mexico, China. They are Southeast Asian or Asian countries. So we can say that overall, broadly, the world migration corridor is mainly from Eastern Asian and South Asian countries to American and European countries. So this is the broad pattern of the world migration. Now, if we, in the next step, if we want to see that how that COVID-19 from a particular epicenter become a global pandemic or epidemic. We all know that COVID-19, it has emerged in a city, Wuhan. No, the first case was detected in Wuhan, China, Hubei provinces. Now from there, and it was reported somewhere in the late December 2019. And within a very short period of time, it became a global pandemic. How? The major link of spreading this COVID-19 to the world is mainly the migration. Outside of China, the first case was detected in Thailand around 13 January somewhere. And after that, within a very short period of time, till 30 January, it has spread across 21 countries, including India. And, total cases were almost 10,000 cases across 21 countries. And one thing is very clear, among all these countries, these 21 countries, the initial infection or the transmission happened in the nearby country of the China, and then it has spread to American countries and European countries. And all these countries, they got their first COVID cases through the international migration link. And all the countries till 30 January, all the countries except Germany, all the 20 countries having a direct international link with the
Wuhan or China. So this is very important things to remember, that how international migrants are mainly affecting in spreading the global COVID-19 cases. So in this context, when I think about that, what is the role of migration in the COVID-19 domain, I find it that migration has a dual role. If you consider the in-migration is basically the cause of COVID-19 infection. But on the other hand, when a country got lots of COVID-19 infections, that time out-migration becomes a result. That's when COVID-19 is the cause and out-migration is a result that we can see across the Indian states. Initially, the migration has mainly how the migration is mainly impacted on spread of COVID-19 in Indian states. Now, coming to the another context of that how COVID-19 has spread, arrived in India and spread across the different states. There is a very clear-cut link with the migration. The first case of COVID-19 in India was detected in Kerala on 30 January. And that case was detected in Kerala, has a direct international link. That 3 students came from the Wuhan. Among them, one was reported COVID-19 positive in Kerala. But Kerala government did very remarkable things. They traced all the 2,500 persons, and they put them into quarantine and controlled the situation. And you see that since February, there was no cases detected in India. By that time, government has also took some measures, particularly traffic controls and all. But on March 2nd, the second state that has been infected by the COVID-19 case is it is the UT, Delhi. If you talk about the state, it is the Telangana. On 2nd March. So 2nd March, that person also having international link that he came from Dubai. And consequently, Rajasthan and other states have also its first COVID-19 cases. And till Goa, it is infected till 25th. Almost 21 states in India that have been affected, they received their first COVID-19 cases through international migration. And important to mention that among all these states, only Kerala got the COVID-19 infection from the international migration from the epicenter, that is Wuhan or China. All other states, they received Sir, I think he lost his connection. सर संजय एक बार कॉल कर लेते सर. मैडम उन्होंने ये कहा था अगर इनकेस बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा तो वी कैन वाइंड अप. अच्छा, अर्चना मैम सुन रही हैं? अर्चना मैडम, सर प्रिंसिपल सर. सर 1 second, कॉल अर्चना मैम. यस सर. सर आपके माइक म्यूट में सर, अनम्यूट कीजिए. सर आवाज आ रही है ना? हाँ सर. एक्चुअली सर संजीत सर ने ये कहा था इनकेस बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो वी कैन वाइंड अप द प्रोग्राम.
So मैं मतलब अगर कह रहा था we can ask our Shabna madam to go for the vote of thanks. फोटो क्या सर? So I would now like to invite Mr. Shabnam Kumari, HOD Department of Political Science, for vote of thanks. Over to you, madam. Thank you, sir, for giving me an opportunity to be a part of this wonderful webinar. Honorable Vice Chancellor, Professor Rajesh Singh, our guest of the day, Professor A.K. Pandey, distinguished speaker, Dr. Archana Kuzur, and Dr. Sanjeev Sarkar, respected principal, Dr. L.P. Jaiswal, respected senior teachers, colleagues, and all participants, a very warm good afternoon. I am Sabnam Kumari, Assistant Professor, Department of Political Science. It is a matter of pride for me that I have been invited to give the vote of thanks for the webinar. First of all, I would like to thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Rajesh Singh, for your kind support to organize this national webinar. I would like to thank the chief guest, Professor A.K. Pandey from A&D College, Sahpur, Patori, for accepting our invitation and gracing the occasion. I would like to thank our deep sense of appreciation toward Dr. Archana Kuzur and Dr. Sanjit Sarkar for sharing your ideas on the impact of COVID-19 marginalized section for the society. This is a very relevant topic for research in the current scenario. It is the problem not only for India, but all the countries of the world are more and less suffering for this pandemic situation. I would like to thanks to our respected principal, Dr. L.P. Jaiswal, the chairperson of the webinar, for your kind support and constant encouragement. I would like to thanks Dr. Vindhyachal Sar and Dr. Nirmala Kushwaha, the organizing committee member for our occasion. I also convey our gratitude to all the staff of BRB College for your support. The most important part of the webinar, you rightly guessed, yes, the participants. I would like to thank for the bottom of my heart for your patient and peaceful cooperation and for turn out the such good number to attend the program. I must mention the deep sense of appreciation for Dr. Ullas T, convener of today's webinar, for successful organizing this webinar. Thank you once again for join us today. Goodbye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. We appreciate you being here. So I ask principal to give permission to wind up the program, sir. प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. I would like to express my gratitude in Hindi. प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले मैं कुछ अपने रिसोर्स पर्सन्स और चीफ गेस्ट के प्रति उद्गार व्यक्त करना चाहूँगा. अभी डॉक्टर अर्चना कुजूर ने जो पीपीटी के माध्यम से सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि चाहे आइदर इट इज सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन,
सभी स्तर के शिक्षा जो है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो चुके हैं, यह बात सही है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही पड़ा है शिक्षा के क्षेत्र पर। जैसा कि इन्होंने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, की भी चर्चा की इन्होंने। वाकई किसी देश में, देश को यदि कमजोर करना हो तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दीजिए। तो आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था, कोविड-19 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि बच्चे आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से दूर हो गए हैं। यह बात सही है कि उसकी भरपाई ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के माध्यम से या वेबिनार के माध्यम से हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ए ओशन ए ड्रॉप इन द ओशन। जहां हम फिजिकल आमने सामने बोर्ड वर्क करके बच्चों को पढ़ाते थे, क्लास में सामने इंटरेक्शन होता था। अब हम देखिए कि अभी संजीव सरकार साहब बोल रहे थे, बीच में ही ऑफलाइन हो गए ऑनलाइन से, और हम लोग उनसे टूट गए। उनका सार गर्भित भाषण बंद हो गया और बीच में ही प्रोग्राम को रोकना पड़ा। उसी तरीके से हम लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग तो करते हैं, टीचर भी कभी बीच में ही ऑफलाइन हो जाते हैं, बच्चे ऑफलाइन हो जाते हैं। मैंने तो ये देखा है कि बच्चे मोबाइल को ऐसे ऑन करके पढ़ते हैं, कोई बेड पर सो जाते हैं, कोई ऊँघते रहते हैं। माने एक स्थिति है, क्योंकि मैंने कार्टून में कहीं देखा था। तो ये है ऑनलाइन की पढ़ाई। लेकिन मित्रों, आखिर दूसरा कोई विकल्प तो नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो आज एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा है कि बच्चे हमसे दूर हो गए। मैं भविष्य में सभी टीम मेंबर्स को जो न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर बीआरबी कॉलेज ज्वाइन किए हैं, या पूरे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जब भी वेबिनार हो तो सिर्फ इसमें रिसर्च स्कॉलर, विद्वान प्रोफेसर, अरे हम लोग तो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, उन्हीं के लिए नहीं हो, बल्कि हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं उनको भी वेबिनार से जोड़ा जाए, उन्हीं के लायक टॉपिक रखा जाए। जैसे हमारे बीआरबी कॉलेज में जनरल एजुकेशन में तीनों स्ट्रीम है, वहाँ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, मात्र 12,000 स्टूडेंट है, और यदि डिस्टेंस को ले ले तो टोटल 17,000 विद्यार्थी है, और हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या लगभग 450 है, जो पूरे देश के कोने कोने से, विदेश से भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी संख्या है। यदि बीआरबी के बच्चे अगर 20%, 25% भी जुड़ते तो यह संख्या हजारों की होती। हम लोग उनके लायक टॉपिक का भी सिलेक्शन करें जो नॉलेज ओरिएंटेड हो, वे भी जुड़े। गूगल मीट से ना सही, स्ट्रीम यार्ड से ना सही, ये यूट्यूब लाइव से ही जुड़ करके हमारे प्रवचन को सुने, हमारे स्पीच को सुने और अपने ज्ञान का वर्धन करें। हम लोग यह प्रयास करें कि बच्चे भी जुड़े और उन्हीं के लायक, जैसा कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो जो सिलेबस का टॉपिक है उसी को चुन करके उनको वेबिनार से जोड़ दिया जाए। हम लोग तो सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गए, देश विदेश घूम लिए, ये वर्चुअल के आप फिजिकल अटेंड किए, लेकिन हमारे बच्चे जो आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से दूर हो गए, जान बचा के घर में छिपे हुए हैं। ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग भगवान भर से चल रहा है। जैसा कि कार्टून में मैंने देखा था कि मोबाइल खोल करके, और कुछ तो हमारे ऐसे भी बच्चे हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश है, इंडिया
इज द कंट्री ऑफ विलेजेज। यहाँ की 80%, मोर देन 70% जनता गांव में निवास करती है। वहां कहीं कुछ गांव तो ऐसा है, उल्लास साहब आप तो केरल से आए हैं, जहां 100% लिटरेसी है। वी आर लकी एनफ टू गेट यू इन बिहार, इन BRB कॉलेज। लेकिन जरा की स्थिति को देखिए, जो नेपाल के बॉर्डर को टच करता है, अभी बिजली का खंभा भी नहीं है वहाँ। बहुत सारे गांव ऐसे हैं। अरे गांव की बात छोड़िए, आप नेपाल के बॉर्डर पर मधुबनी चले जाइए। मधुबनी जिला की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं मधुबनी जिला में ही था, समस्तीपुर जिला से पहले। मैं जिस कॉलेज में था वहां बिजली का खंभा नहीं था। सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कैसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग होगा, कैसे? बड़ी मुश्किल है। अभी तक उस कॉलेज का नेक भी नहीं हुआ है। तो जहां बिजली नहीं है, तो मैं गया तो इन्वर्टर बैटरी खरीद करके वहां पर काम चलाऊ बिजली की व्यवस्था किया। बहुत दूर से, करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी से मैं बिजली का खंभा खिंचवा के कैंपस तक लाया। तो अभी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं, न केवल बिहार बल्कि इंडिया में भी, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। वहां बच्चे भी ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे भाई? बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसा कि अभी चर्चा हुई मार्जिनलाइज सेक्शन की, आपने बात की, जिनके पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, एक छोटा सा फोन है बात करने के लिए, तो वे वेबिनार से कैसे जुड़ेंगे? तो यहाँ चिंतन का विषय है, यहाँ चिंतन का विषय है। आज ये कोविड-19 वर्चस्व की लड़ाई में आया है। ये वर्चस्व की लड़ाई, कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्योंकि चीन का जो है ना, विवेक मर गया है। वो इतना वर्चस्व कायम करना चाहता है पूरे विश्व पर कि आज उसका विवेक शून्य हो गया है, रावण की बुद्धि हो गई है। और वुहान शहर से ही रिसाव हुआ, जैसा कि सरकार साहब ने कहा। और वो कितना चालू था कि बगल में बीजिंग है, वहां वायरस नहीं गया। ये क्या है? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। चाइना का विवेक खत्म हो गया है। वो पूरे इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात कही सरकार साहब ने, वो अपने बीजिंग में किसी को नहीं जाने दिया। मानते हैं कि वो प्रयोग कर रहा था, कुछ बना रहा था दवा के रूप में। सुन रहे थे कि पोलियो का वैक्सीन शायद बना रहा था। गलती हो गई, रिसाव हो गया। उसको चाहता तो वुहान तक ही सीमित रखता, अपने बीजिंग जो उसका कैपिटल है नहीं जाने दिया किसी को, और चुपके चुपके पूरे विश्व में फ्लाइट से भेज दिया उस रोग को, उस वायरस को। आज देखिए पूरा विश्व उसके चपेट में है। ये बात सही है कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन यह बात कि वो खुद बीजिंग में नहीं किसी को भेजा, पूरे विश्व में भेज दिया। मजे में चले जाओ फ्लाइट से और वायरस लेके चले जाओ, बांट दो। आज पूरा विश्व चपेट में आ गया है। तो मित्रों, अभी समय आ गया है ऐसे आतताइयों, ऐसे राक्षसों, ऐसे रावण के विनाश करने का। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह पंक्ति लिखी है, वो दिन आ गया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। हमारे संत शिरोमणि भी यहाँ बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको। जरा ध्यान से सुनिए, इसकी सख्त जरूरत है पूरे विश्व में। चाइना पर पूरा विश्व अटैक करे कि वो एक तरफ वायरस फैलाया, दूसरे तरफ हमारे भारत माता पर उसकी तिरछी नजर लगी हुई है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि। अभी शुरू में इन्होंने, पांडे जी ने यह बात कही, क्योंकि इनका प्रवचन तो बहुत लंबा चलता है। मैंने 2 बार फोन करके रोक दिया, नहीं तो 2.5-3 घंटा इनके लिए अकेले है, पूरा वेबिनार स्वाहा कर देते। तो सरकार साहब का भी टाइम ले लेते, जो बीच में ही कट गए। लेकिन खैर, उसकी भरपाई अब मैं कर रहा हूं। ये जरा ध्यान देने की बात है कि मानस में राम गोस्वामी तुलसीदास ने जो अभी तुलसी देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज है लिखा है।
पंक्तियां लिखी है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हर ही सदा भव सज्जन पीड़ा। तो प्यारे मित्रों, चाइना को जवाब देने के लिए अवतारी पुरुष की जरूरत है। अभी वह राक्षस है जो पूरे विश्व में वायरस को फैलाया। अपने वुहान से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर बीजिंग है, वहां नहीं जाने दिया। ठीक है, गलती हुई, रिसाव हो गया, लेकिन ये कौन गलती है? इसलिए पूरे विश्व को जगने की जरूरत है। किसी को रामा अवतार और कृष्णा अवतार लेने की जरूरत है, और चाइना का अंत होना चाहिए जो पूरे विश्व के मानव जीवन को संकट में डाल दिया है। और अभी जो खेल कर रहा है हमारे देश पर, गलवान घाटी में कितने हमारे सैनिक पिछले दिनों मारे गए, ये तो साफ लगता है कि उसका भोजन भी राक्षस का, बुद्धि भी राक्षस की है। ऐसे अत्याचारी राक्षस का अंत होना ही चाहिए। उलास साहब, आप एनसीसी अफसर हैं, आप देश के सैनिक को बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको मातृभूमि के प्रति उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरने की जरूरत है। उनको यह बताने की जरूरत है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। उल्लास साहब, उपदेश देने की जरूरत है उन सैनिकों को जो आप बनाते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज सभी हिंदुस्तानियों के दिल में ये भाव होना चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए कि एक एक हिंदुस्तानी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे, पूरा विश्व उस पर टूट जाए। ऐसे अत्याचारी आतताई राक्षस का अंत हो, तभी विश्व का कल्याण होगा। ये तो इतिहास साक्षी है। अब हमको भी थोड़ा लंबा बोलने की, चूंकि पोडियम पर बोलते हैं तो थोड़ा विशेष बोलते हैं, कौन ठिकाना कहीं मेरा भी कट हो जाए बीच में ही, इसलिए शॉर्ट में ही हम कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा आफत यही है, ऑनलाइन तो हम लोग काम चलाऊ कर रहे हैं भाई, फिजिकल का तो करेगा नहीं। हम ही लोग जो सेमिनार करते हैं, जरा देखिए, पांडे जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब हम पटोरी में थे तो पूरे 5 वर्ष उत्सव में ही कट गया। मैंने इनके साथ, इसीलिए मैंने इनको याद किया कि इनके साथ हमने गवर्नर का प्रोग्राम किया, कॉलेज का गोल्डन जुबली मनाया, जो एक बहुत बड़ा कदम था, मार्वेलस प्रोग्राम था। करीब 16-17 लाख रुपए खर्च हुए थे, उसका पंडाल देखने लायक था। कॉलेज का बहुत अच्छा सोवेनियर निकाला आपने, बहुत अच्छा सोवेनियर निकाला। BHU के प्रोफेसर साकेत कुशवाहा भाई चांसलर थे, उन्होंने ये अभिव्यक्ति की थी अपने चैम्बर में दरभंगा में कि भाई एक इंटीरियर इलाका का कॉलेज पटोरी, इसका जो सोवेनियर है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति, देश के शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री का भी मैसेज था उसमें। अब सोचिए, जब वहां के लोग थे तो क्या बाकी रह गया, गवर्नर और CM तो थे ही, और उसकी भाषा शैली ऐसी थी। आज तक मिथिला यूनिवर्सिटी में नहीं निकला, आपने जैसा निकाला